السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس القرآن Day 8 of Ramzan al-Mubarak. Today's dars will be start from verse 41 of chapter 2 سورة البقرہ. آج کا درس سورة البقرہ کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Verse 41, chapter 2, Surah Al-Baqarah. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. O children of Israel, children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you, and fulfill your covenant with me. I will fulfill my covenant with you, and me alone should you fear. There are some explanations. Israel is another name of Jacob, son of Isaac. This name was bestowed on Jacob by God later in life. The original Hebrew word is compound one made up of Yasara and El, and means God's prince, warrior or soldier. Concordance by Cruden and Hebrew, English lexicon by W. Jasnius. The word Israel is used to convey three different senses. One, Jacob personally. Second, progeny of Jacob. Third, any righteous and God-fearing person or people. The subject of this verse is to explain some details of it. After Abraham, the covenant was renewed with the Israelites. This second covenant is mentioned at several places in the Bible. When the covenant was being made
and the glory of God was being manifested on Mount Sinai. The Israelites were so terrified to see the thunderings and the lightnings and the noise of trumpet and the mountain smoking that accompanied this manifestation, that they exclaimed to Moses, saying, "Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die." These impudent words sealed their fate. For thereupon God said to Moses that in future no law-giving prophet as he was would appear from among them. Such a prophet would in future appear from among the brethren of the Israelites, that is, the Ishmaelites. Thus, in this verse, God reminds the children of Israel, and he had made a covenant with Isaac and his seed after him to the effect that if they fulfilled their covenant with him and obeyed all his commandments, he would continue to bestow his favor on them. But if they did not fulfill it, they would be deprived of his favor. Now, as the Israelites utterly failed to keep the covenant, God raised a promised prophet from among the Ishmaelites, as he had already promised, and henceforth the covenant was transferred to the followers of the new prophet. Verse 42. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, and believe in what I have sent, which fulfills that which is with you, and be not the first to disbelieve therein, and barter not my signs for paltry price, and take protection in me alone. Musaddiq. What is the Musaddiq? Musaddiq is derived from Saddaka, which means he held or declared him or it to be true. When the word is used in the sense of holding a thing to be true, it is either followed by no preposition or by the preposition ba. But when it is used in the sense of fulfilling, as in the present verse, it is followed by the preposition lam. So here it means fulfilling and not confirming or declaring to be true. The Quran fulfills the prophecies that were contained in the previous scriptures regarding the advent of the law giving prophet and a universal scripture. Wherever the Quran speaks of itself as being musaddiq of the previous scriptures, it does not confirm their teachings but claims to have come in fulfillment of their prophecies. Nevertheless, it accepts the divine origin of all the revealed books before it, but it does not look upon all their present teachings to be true in their totality. For parts of them have been tempered with the much that was meant for a specific period has now become obsolete. Verse 43. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, and confound not with falsehood, nor hide the truth knowingly. Here the Jews are forbidden first to mix the true with the false by quoting verses from their scriptures and putting wrong interpretation on them, and second, to suppress or hide the truth, that is, suppress such prophecies in their scriptures as refer to the Holy Prophet. Verse 44. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ,
and observe prayer and pay the zakat and bow down with those who bow. Warka'u marraki'in. Rake means one who bows down before God. The Arabs used the word for one who worshipped God alone to the exclusion of idols. Verse 45. Atamuruna nasa bil bir. Do you enjoin others to do what is good and forget your own selves while you read the book? Will you not then understand what book is mentioned here and what is the bir? Bir, that means good, means behaving benevolently towards relations and others, truthfulness, fidelity, righteousness, obedience to God. The word also means extensive goodness or beneficence. Book which is mentioned here refers to the Bible, but the clause while you read the book does not imply that all the contents of the Bible have been accepted as true. Verse 46. Wasta'inu bis sabri was salah, and seek help with patience and prayer, and this indeed is hard except for the humble in spirit. What does sabr mean? Sabr means to adhere steadily to what reason and law command, and to restrain oneself from what reason and law forbid, and from manifesting grief, agitation, and impatience. This verse, along with the one that follows, may be taken to be addressed either to the Jews or to the Muslims. In the former case, it constitute is it constitutes a continuation. This verse, along with the one that follows, may be taken to be addressed either to the Jews or to the Muslims. In the former case, it constitutes a continuation of the address to the Israelites, meaning that they should not be hasty in rejecting the Holy Prophet, but should try to find out the truth with patience and prayers. As taken to be addressed to Muslims, it gives them to a message of hope and encouragement. If they acted with patience and prayer, they need have no fear. Verse 47. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, who know for certain that they will meet their Lord and that to him will they return. Now I'll explain in Urdu. आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 41 से शुरू हो रहा है। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमत यल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल तुम मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मेरे साथ जो ऐहद किया था उसको पूरा करो। तब मैंने जो ऐहद तुम्हारे साथ किया था मैं उसको पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो, फिर मैं कहता हूं कि मुझ ही से डरो। तो यहाँ बनी बनी इसराइल के उस अहद का जिक्र है कि अगर तुम मेरे इनाम की कदर करोगे तो वो इनाम तुम पे जारी रहेगा, और अगर तुमने उसकी नाकदरी की तो ये अहद तुमसे पूरा नहीं होगा, और नबूवत का जो इनाम है वो तुमसे छीन कर बनु इस्माइल को दे दिया जाएगा। वामिनू बिमा अनजल तो, और उस कलाम पर ईमान लाओ, उस कलाम पर ईमान लाओ जो मैंने अब उतारा है, और उस कलाम पर जो तुम्हारे पास है सच्चा करने वाला है, और तुम इसके सबब से पहले काफिर न बनो, और मेरी आयतों के बदले में थोड़ी कीमत मत लो, और मुझ ही से डरो, फिर मैं कहता हूं कि मुझ ही से डरो। यहाँ वला तश्तरू
बेआयाती समनन कलीला का जिक्र है, थोड़ी कीमत ना लो। तो इस बारे में याद रखना चाहिए कि यहाँ ये मुराद नहीं है कि थोड़े पैसे ना लो, बल्कि ये मुराद है कि मेरी बातें जो दीन हैं उनके बदले दुनिया ना लो, क्योंकि दुनिया दीन के मुकाबले में बिल्कुल हकीर चीज है, खा ज़ाहिरी लिहाज से वो कितनी ज्यादा ही हो। वक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन, और नमाज को कायम रखो और ज़कात दो, और खुदा की खालिस परस्तिश करने वालों के साथ मिलकर खुदा की खालिस परस्तिश करो। तो इसमें रुकू करने वालों से मुराद ये है कि वो लोग जो एक खुदा के सामने झुकते हैं, दीगर बुतों वगैरह को वो नहीं पूजते। अतामुरून अन्नास बिलबिर व तनसौना अनफुसकुम, क्या तुम दूसरे लोगों को तो नेकी करने के लिए कहते हो और अपने आप को फरामोश कर देते हो, हालांकि तुम किताब यानी तौरात पढ़ते हो, फिर भी क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। तो इसमें यह इशारा है कि जो काम खुद नहीं करते वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि तुम ये करो। खुद तो वो बुराइयों में मुब्तला हैं, किताब पर अमल नहीं करते, तो दूसरों को कैसे किताब पढ़ने की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। दूसरे यहाँ ये काबिल वज़ाहत बात है कि अल किताब से मुराद यहाँ तौरात है, और यहूद लोगों का ये वतीरा था कि वो किताब पर खुद भी अमल नहीं करते थे और उसमें जो पेशगोइयाँ थीं उसको भी छुपाते थे। तो दोनों बातें यहाँ पर मुराद हो सकती हैं। अगर वो उनकी पेशगोइयों को देखते तो वो यकीनन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, क्योंकि वो पेशगोइयाँ आप पर इतलाक पाती थीं और आप पर पूरी हुई। अफला ताकिलून, पस क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। यहाँ ये भी देखने की बात है कि अल किताब जो तौरात है, कुरान करीम अगरचे उसका मुसद्दिक है, लेकिन कुरान करीम उसकी पूरी तौर पर तस्दीक नहीं करता। ये तो तस्लीम करता है कि वो खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया पर उतरने वाली किताबें थीं, लेकिन अब वो काबिल अमल नहीं है। एक तो इस वजह से कि वो महदूद वक्त और महदूद ज़माने या महदूद कौम के लिए थीं। दूसरे ये कि उस उन किताबों के मानने वालों ने उनमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी, तहरीफ कर दी, तो अब वो इस काबिल नहीं रह गई कि उनकी सारी बातों को माना जाए। हाँ, उनमें जो बातें दुरुस्त हैं या जो पेशगोइयां मौजूद हैं और वो पूरी होती हुई नजर आती हैं, उनके उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और सब्र और दुआ के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद मांगो, और बेशक फ़रोतनी इख्तियार करने वालों के सिवा दूसरों के लिए ये अमर मुश्किल है। तो यहाँ ये हुक्म है कि जो तुम पे तकलीफ़ें आती हैं, जो मुश्किलात और मसाइब आते हैं, जो कि मोमिनों पर आया ही करते हैं, तो उनमें अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगनी चाहिए, सब्र के ज़रिए और दुआ के ज़रिए, नमाज के ज़रिए। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, वो खुशू इख्तियार करने वाले जो कि वो फ़रोतन जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, और इस बात पर भी कि वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यहाँ जन के माने यकीन के किए गए हैं। अरबी ज़ुबान में इसके माने यकीन करने के भी होते हैं, जैसे कि मुफ़रदात राग़िब की मशहूर किताब में लिखा है कि आयत यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम में ये यही माने मुराद हैं, और यहाँ पर इन्हीं मानों को मद्देनज़र रखा गया है। आज का दर्स ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।